Hello students, let's start off with the next part of our chapter P block elements and previous year question discussion. So in this we are going to discuss about group 14. Group 13 के questions कर लिए, अब group 14 के ऊपर जो questions आए थे वो कर लेंगे. ठीक है, चलो सबसे पहला question देख. The first question says the carbon to carbon bond length is maximum in what? Now this question is a 2019 मेंस क्वेश्चन, तो ध्यान देते हैं हम लोग. चलो सबसे पहले ऑप्शन आर ग्राफाइट, C60, C70 एंड डायमंड. नाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू नो ओवर हियर इज कि अगर तुम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डायमंड में चेक करोगे तो डायमंड में इट कम्स आउट टू बी 154 पिकोमीटर्स. Similarly, if you talk about the carbon to carbon bond length for graphite, it comes out to be 141 picometers. And if you talk about C60 and C70, then C60 के लिए वो आ जाता है around 143 picometers, whereas C70 के लिए वो आ जाता है around 138 picometers. So यार चेक करके बताओ इसमें मैक्सिमम साइज तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? तो obviously maximum size would be obtained in diamond. So therefore the correct answer over here is option D. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगेन अ 2019 क्वेश्चन. ओवर हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ फेल्डस्पार, zeolite, mica and asbestos is what? The given options are number 1 SiO3 2-, number 2 is SiO2, number 4 is SiO4 4-, and number 5 is the structure which is shown in the option. Now over here ये एक factual question है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना and इसको याद रखने की कोशिश करना. Feldspar, zeolite, asbestos या mica, all of these four compounds will have a basic unit structure of SiO4 4-. and एक और चीज याद रखना, SiO4 इसमें obviously your all oxygen atoms would be connected to silicon as the center atom and all the oxygen atoms would have a negative charge. Also अगर ये मॉलिक्यूल तुम्हारा एक टर्मिनल मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे कोई एक ऑक्सीजन अगर टर्मिनल ऑक्सीजन है तो वो सिर्फ सिलिकॉन के साथ कंबाइन करेगा, किसी और सिलिकॉन के साथ. बट अगर वो टर्मिनल नहीं है देन इट वुड बी हैविंग एन OH ग्रुप. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन of group 14. Let's see the third question. It reads out the correct order of catenation is given as follows. The four options are as follows. The very first option reads out carbon greater than Sn greater than Si, which is almost equal to Ge. Next one, option B, reads out Si greater than Sn greater than carbon greater than germanium. C reads out carbon greater than silicon greater than germanium equal to Sn, that is tin. And the last option reads out germanium greater than silicon, germanium greater than tin, greater than silicon, greater than carbon. So over here what we need to know कि भाई ग्रुप 14 में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलता है? तो it's definitely carbon. So what we need to know is carbon has the highest catenation property in group 14. hey, carbon अगर सबसे ज़्यादा है तो definitely option B and option D तो anyways they are just ruled out, so you are only remaining out with option A and option B. Over here if you notice carbon is greater than tin, which is greater than silicon, which is almost equal to germanium. Now over here carbon atomic number है 6. अच्छा, कार्बन के तुरंत नीचे कौन आता है? तो कार्बन के इमीडिएट नीचे आता है सिलिकन. सो ओवर हियर व्हाट वी नीड टू नो, एंड हमें एक चीज़ पता भी है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप तुम्हारे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती जाएगी. सो देयरफॉर कार्बन हैज़ टू बी ग्रेटर देन सिलिकन एंड देन एवरीथिंग शुड फॉलो. Therefore, your correct option over here is option C. एक चीज़ और ध्यान रखना, lead, which is the last element of your group 14, shows no catenation property. इसमें कोई भी कैटिनेशन नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता? सो बिकॉज इसका साइज इतना बड़ा है कि इट कांट कंबाइन अमॉन्ग्स इटसेल्फ टू गिव यू अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. सो ओवर हियर यू विल गेट नो कैटिनेशन प्रॉपर्टी. चल लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द amorphous form of silica is what? The options tridymite, next option is kieselguhr, third option is cristobalite and the last option is quartz. Now over here again a factual question. ध्यान में रखने वाली बात,
सिलिका के लिए amorphous form एक ही होता है and that amorphous form is Kizilgur. So over here obviously the correct option is option B, Kizilgur. बाकी जो भी है tridymite या crystallobite and next one is quartz. All of these are not amorphous form, they are crystalline form of silica. Please remember this. ठीक है, चलो let's go on with the next question. The next question, C60 is an allotrope of carbon which contains what? Now over here सबसे पहला question, C60 is nothing but also referred as Buckminster fullerene. So over here this is Buckminster fullerene and हमें पता है according to the facts that we have learned in the chapter of P block that Buckminster fullerene contains Buckminster fullerene contains 20 hexagons and 12 pentagonal rings and it is in the shape of a soccer ball. So definitely यार यहाँ पे कौन सा option सही आ जाएगा? तो for this the correct option is option B, that is 20 hexagons and 12 pentagons. Again remember this is a factual question लेकिन पूछा गया and पूछा गया recently ही पूछा गया. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. ये भी 2019 मेंस क्वेश्चन है. So over here the element that does not show catenation property, as we discussed just some time ago. Now as we discussed just few questions ago, lead amongst group 14 catenation नहीं show करता. So over here yes, your absolute answer is option D, which is lead. Let's go further. The next question reads out, the element that shows greatest probability or greatest ability to form p-pi multiple bonding is who? Now over here ध्यान रखना, p-pi बॉन्ड्स बनाने के लिए दो कंडीशंस की ज़रूरत होती है. ऑब्वियसली पहली कंडीशन तो यही है कि तुम्हारे पास p-pi ऑर्बिटल्स होने चाहिए या तुम्हारे पास p ऑर्बिटल्स होने चाहिए. इफ़ यू नोटिस अबाउट कार्बन हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 6 and atomic number 6 electronic configuration comes out as 1s2, 2s2 and 2p2. So over here if you notice कार्बन के पास p orbital vacant पड़ा हुआ है, no doubt about it. ठीक है, on top of that if you imagine carbon also has the smallest size in your group 14. So यार अगर एटम सबसे छोटा है एंड प्लस उसके पास वीकेंट ऑर्बिटल्स भी पड़े हुए तो बॉन्ड काफ़ी इजीली बना लेगा ना. एंड ओवर हियर इफ़ यू नोटिस बाकी के जितने भी एलिमेंट्स दिए गए, देखो जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया या सिलिकन हो गया, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स अगेन आर फ्रॉम ग्रुप 14 ओनली. सो यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा would definitely be not based on electronic configuration but it would be based on atomic size. जिसका atomic size सबसे छोटा वो सबसे ज़्यादा bonds बना सकता है and therefore सबसे छोटा size यहाँ पे किसका आएगा? It's obviously for carbon and thus carbon would show you the highest number of p-pi bondings. Let's move further with the next question. The next question says the chloride that cannot get hydrolyzed is which chloride? Let's look at the options first. The first option says SnCl4, next option says CCl4, the next option says PbCl4 and the last option says SiCl4. अगेन एक पॉइंट नोटिस करने लायक, जितने भी ऑप्शंस तुमको दिए हैं ऑल आर क्लोराइड्स, पॉइंट नंबर 1, एंड ऑल ऑफ देम आर ग्रुप 14 क्लोराइड्स. यार ग्रुप 14 क्लोराइड से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ग्रुप 14 contains outermost electronic configuration as NS2Np2 एंड कार्बन ग्रुप 14 का इकलौता ऐसा एलिमेंट है कि अगर वो 4 बॉन्ड्स बना ले तो वो और अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? सब बिकॉज उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं पड़े. तो इफ यू इमेजिन समथिंग लाइक दिस, इफ कार्बन इज ऑलरेडी मेकिंग 4 बॉन्ड्स विद द क्लोरीन एटम ओवर हियर, नाउ this carbon doesn't have any empty orbitals, neither p, neither d, neither s. कोई भी empty orbitals यहाँ पे नहीं है. एंड अगर यार कोई भी empty orbitals नहीं रहेंगे तुम्हारे पास तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेते हो किसी से तो तुम वो इलेक्ट्रॉन कहीं रख नहीं पाओगे. एंड अगर रख ही नहीं पा रहे हो तो एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? अच्छा एक और चीज़ नोटिस करो, सिलिकन, इफ़ यू नोटिस सिलिकन हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 14 एंड atomic number 14 silicon electronic configuration would come as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. अच्छा यहाँ पे
अगर p ऑर्बिटल फिल हो जाता है तो तुम्हारे पास 3d पड़ा हुआ है ना वेकेंट, एंड दिस 3d ऑर्बिटल्स कुड बी यूज्ड अप फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स. अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में हाइड्रोलाइज दिया हुआ है. हाइड्रोलाइज मीन्स यू आर एडिंग वाटर, दैट इज HOH, oxygen with his 2 lone pairs. What would happen? Definitely oxygen is going to donate that lone pair, and अगर oxygen electron donate कर रहा है या lone pair donate कर रहा है, silicon, lead as well as tin, all three of them have vacant d orbitals, so they could accept those electrons and they could keep it. But then carbon doesn't have any vacant orbitals, and अगर उसके पास vacant orbitals ही नहीं बचे तो definitely वो accept नहीं कर पाएगा, and he is the person who is not going to undergo hydrolysis. So over here the correct answer is C, Cl4, that is option B. Let's go on with the next question. The next question says, which amongst the following 4 statements are correct for silicons? ठीक है, 4 statements, what are those? The first statement says they are polymers with hydrophobic characters. Number 2, they are biocompatible. Number 3, in general they have high thermal stability and low dielectric constant. The fourth statement says usually they are resistant to oxidation and used as grease. So over here let's have a look at what exactly are the correct statement. अच्छा, सबसे पहला statement, they are polymers and hydrophobic in nature. So definitely this statement is the right statement. Silicons are hydrophobic in nature. Hydrophobic का meaning क्या होता है? They would easily repel water. They won't let water sit on their surface. Further, the next one, they are biocompatible. Now biocompatible, what do you mean by this? Biocompatible का meaning ये होता है that they don't allow microbes or bacteria to grow on their surfaces, and that's definitely right. And because of this, silicons are majorly used for manufacturing milk bottle for small babies, क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया एंड फंगस या बैक्टीरिया एंड जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है वो बहुत कम होगी. ठीक है. फर्दर, इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यार हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये चीज़ समझ में नहीं आई. हाई थर्मल स्टेबिलिटी सिलिकॉन्स में होता है क्या? तो डेफिनेटली नहीं होता, क्योंकि अगर तुम इसको थोड़ा सा हीट कर लोगे इट वुड डेफिनेटली मेल्ट इट डाउन, and therefore they don't have high thermal stability. So statement 3 is definitely the wrong statement. Acha, let's have a look at statement number 4. The statement 4 says usually they are resistant to oxidation. That's definitely true. They are resistant towards oxidation, and yes, they could be used as lubricating solvents or they could be used as lubricants. Grease होता क्या है? तो ये भी एक टाइप का lubricant है, and therefore statement 4 is also the right statement. अच्छा, यहाँ पे फिर कितने correct statements आ गए? चेक करो. तो first statement yes correct था, second statement even this is correct, and the fourth statement also this one is correct. So therefore the correct statements is 1, 2 and 4, and thus option D is the correct option. Let's go further with the next question. The next question says identify the correct acidity order for following. The given compounds are CO2, H2O, CaO and CuO. Now over here this thing becomes very simple. Understand this. अच्छा, CO2 ये क्या होता है? ये होता है एसिडिक ऑक्साइड, ये तो हमें पता है. CO2 is an acidic oxide. Fine, no worries with this. अच्छा, next one, if you talk about water, water is definitely a neutral oxide. Next, if you talk about CuO, this has to be a basic oxide. And finally, if you talk about CaO, then CaO क्या हो जाएगा? Again this would be a basic oxide. अच्छा, अब चीज़ नोटिस करो यार, CuO and CaO दोनों ही बेसिक है, तो इसमें से कैसे डिटरमाइन करें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज़्यादा वीक है? तो देन हमें एक चीज़ पता है दैट मेटल्स ऑलवेज फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स. इसमें से दैट इज कॉपर एंड कैल्शियम हु इज़ अ स्ट्रॉन्गर मेटल, देन इट्स ऑब्वियसली कैल्शियम हु इज़ द स्ट्रॉन्गर मेटल. तो यार अगर वो मेटल स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू मेक एन ऑक्साइड विच इज़ मच मोर बेसिक देन copper. So the correct order of acidic strength is सबसे ज़्यादा CO2, next comes H2O which is neutral, so एक midpoint बन जाएगा. Next one comes CuO which is slightly basic, and the last one comes CaO which is strongly basic. So over here the correct option is definitely option A. Let's go on with the next question.
So let's move on with the next question. The next question is a multiple choice question. अच्छा, यहाँ पे question क्या पूछा गया है देखते हैं. The question says with respect to graphite and diamond, we need to find out कि इसमें से कौन से statement सही है या कौन से statement नहीं सही. So we need to find out which statements are the correct statements over here. Let's see. The first statement, graphite is harder than diamond. Yeah, then graphite is definitely not harder than diamond. कैसे पता? So graphite is, you could say graphite is used as a lubricant, and वो क्यों lubricant की तरह use किया जाता है? Because it's soft and it can slide over each other. Graphite में जो layers होते हैं, the layers would slide over each other, and definitely it's not harder than diamond. So obviously ये statement गलत हो जाएगा. अच्छा, second statement देखते हैं. Second statement says graphite has higher electrical conductivity than diamond. Then this is absolutely right. Diamond electricity conduct ही नहीं कर पाता, graphite conduct कर पाता है. So therefore graphite would have a much more higher electrical conductance as compared to diamond. ठीक है, चलो let's move on with the third statement, but before that mark कर लेते हैं यार, statement B is the correct statement. चलो आगे देखते हैं. The third statement, graphite has higher thermal conductivity than diamond. Then yes, even this statement is wrong. Why? Because in graphite the molecules are not densely packed. Okay, and if the molecules are not densely packed, they are not compact, then obviously the thermal radiations, the thermal vibrations, they could not effectively transfer from one atom to another atom. ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी के लिए तुम्हें कॉम्पैक्टनेस लगेगा. अब अगर दो एटम्स बहुत नज़दीक है एक दूसरे के, तो दे कुड इजीली ट्रांसफर द थर्मल वाइब्रेशंस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. लेकिन ग्राफाइट में ऐसा नहीं होता. ग्राफाइट कंटेन्स लेयर जिनके बीच में स्पेसेस होता है. सो डेफिनेटली थर्मल वाइब्रेशंस या थर्मल एनर्जी इतना इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जितना इफेक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, सो ओवर हियर यस, डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. लेट्स मूव ऑन विद द फोर्थ स्टेटमेंट. द फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट ग्राफाइट हैज हायर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ऑर्डर than diamond. Then yes, this is a kind of true statement. अब हम लोग ये सोचेंगे सर ग्राफाइट में भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, डायमंड में भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होता है. देन हाउ कम द बॉन्ड ऑर्डर इज मोर इन ग्राफाइट एज कंपेयर टू डायमंड? देन ध्यान रखना, in graphite there could be certain carbons who could form double bonds, and therefore you would get carbon to carbon double bonded structures. So over here what we can say कि bond order from single bond has converted to a double bond. Therefore even this statement is right. तो तुम मुझे बताओ कौन से दो सही स्टेटमेंट है यहाँ पे? Obviously the correct statements over here are option B and option D. So therefore यहाँ पे कौन से दो statements सही हैं? It's obviously statements B and statements D. So that was all with respect to the questions asked in the previous year's JEE exams for Group 14. Please feel free to drop down a comment as to which chapter you intend to learn further with respect to the past year question papers. Also, please like, subscribe and share this with your friends so even they could benefit from the past year paper discussions. Thank you students and happy learning.